Welcome to We Learn. Session 1, Indian Business Environment, Business and Economics. Topic will be cover principles of economies, explicit cost versus implicit cost, disagreement in economies, public goods, poverty rights, macroeconomic and international economies, issues and priorities of India, sectors of Indian economy. So yes, in this session of Indian business environment, we will going to understand about the principles of economies, that what exactly the economies is and what are the important terms to be understand in economic and how the Indian economy is actually performed. So these are the certain things which we were actually going to study in this session. So the first topic of this session is the principles of economies. Yes, so the first principle of our economy is people face trade-off. Trade-off is generally mean it is a kind of an exchange that occurs as in a compromise or a force. That is basically a trade-off. Trade-off का अगर मतलब बताना हो तो trade-off basically वो होता है जब आप किसी तरीके के exchange process में आते हैं और वो एक्सचेंज प्रोसेस किसी तरीके का या तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है या फोर्स होता है. सो दैट मीन्स सो व्हाट दैट बेसिकली द पॉइंट स्टेट दैट इज एवरी डिसीजन इन्वॉल्व चॉइसेस and more of a one good means less of another good. Income and wealth are not limitless since there is only so much time available. Trade-off apply to individual families, corporations and societies. If we were discussing about economies, तो economies में trade-off is हर जगह अप्लाई होता है. वो एक इंडिविजुअल की लाइफ में भी अप्लाई होता है, एक फैमिली की लाइफ में भी, एक कॉर्पोरेशन में भी, एक सोसाइटी में भी. इन टर्म्स ऑफ अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में हमेशा सर्टन काइंड ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं. उन्हीं रिसोर्सेज से कुछ गुड्स आगे फॉर्म आउट होते हैं. अगर हम एक गुड ज़्यादा बना रहे हैं दैट मीन्स हम दूसरा गुड कम बना रहे हैं. सो दैट मीन्स बिकॉज ऑफ दैट लिमिटेड रिसोर्सेज वी वर प्रोड्यूसिंग द लिमिटेड प्रोडक्ट. और उस लिमिटेड प्रोडक्ट में अगर हम कहीं एड ऑन कर रहे हैं तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ या कहीं पर माइनस भी कर रहे हैं. सो इस तरीके के कॉन्सेप्ट जो हैं इकोनॉमी में फॉलो होते हैं. तो सबसे पहला है द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी में पीपल फेस ट्रेड ऑफ. सेकेंड इज cost of something is what you give up to get it. That means when we make a decision, we in terms of any kind of individual, families, corporation or society take a decision, we implicitly compare the cost and benefits of our choices. इन दैट टर्म्स अगर हम किसी भी तरीके का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उस केस में हम हमेशा ये देखते हैं कि उस की जो कॉस्ट पे की गई है उससे हमें कितना बेनिफिट जनरेट हुआ है. सो इन दैट टर्म्स दिस इज राइज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑल्सो. इस केस में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट राइज होता है. दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वट एवर मस्ट बी गिवन अप टू ऑब्टेन दी समथिंग. जब हम लोगों ने किसी चीज़ को लिया है, यानी कि इफ़ आई चूज़ वन प्रोडक्ट बट आई लीव वन प्रोडक्ट, सो लीविंग दैट वन प्रोडक्ट इज़ माई अपॉर्चुनिटी cost. So in that term, yes, opportunity cost is whatever must be given up to obtain something. Some costs are obvious, out of pocket expenses. Other costs are less obvious but must be included in the total opportunity cost. So there are certain kind of opportunity cost और cost बहुत सारी होती हैं इकोनॉमीज़ के अंदर. कुछ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी होते हैं, कुछ अदर कॉस्ट भी होती है, कुछ लेस ऑब्वियस कॉस्ट होती हैं. सो दिस इज़ बेसिकली इन टर्म्स ऑफ कि अगर इकोनॉमी के अंदर किसी भी तरीके के गुड्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो उस केस में आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो इन द एक्सचेंज ऑफ समथिंग. सो दैट मीन्स यू आर गिविंग द कॉस्ट और आप उनसे गुड्स ले रहे हो. थर्ड प्रिंसिपल इज रैशनल पीपल थिंक एट एन अ मार्जिन. येस, अगर हम लोग दी मेजर पॉपुलेशन की बात करें, इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग परफॉर्म करते हैं, तो जितने भी पीपल होते हैं, दे पीपल ऑलवेज हैव अ सर्टन काइंड ऑफ एन अ रैशनल थिंकिंग. रैशनल इन टर्म्स ऑफ दे ऑलवेज एज्यूम दैट पीपल एक्ट एज अ रैशनली और दे ऑलवेज try to act so as to gain the most benefit from themselves, and yes, to compare to the associated cost. in that terms कि हमेशा जो भी people हैं जिन लोगों को सर्विंग्स हो रही है प्रोडक्ट की, they always looking for the certain kind of benefits only. They want to gain certain kind of benefit always.
Then people responds to incentive. Yes, if the rational people were there, अगर हम लोगों ने एक assumption, एक principle ये लिया that the people are rational, so rational people compare the cost and benefit, then change in either one may change the decision. So in general, people are most likely to buy something if it's cheaper. So if an action become most costlier, then there is an incentive to switch to the other choices. In terms of कि हमेशा एक incentive looking concept होते हैं हमारे people के mind में, in terms of कि अगर rational मानकर चल रही हूँ मैं अपने people को, that means they were always looking for the certain kind of a gains and certain kind of benefits. So in that terms, जो भी गुड्स वो खरीद रहे हैं, इफ इट्स अ चीपर गुड्स तो दे ऑब्वियसली बाय इट विदाउट लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एन इंसेंटिव्स. बट येस, इफ द गुड इज मोर costlier in terms of, then they were looking for the certain kind of an incentive of a switching cost, in terms of कि अगर मैं 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट खरीद रही हूँ और उसका सिमिलर प्रोडक्ट वही मुझे 80 रुपीज़ और 90 रुपीज़ में अवेलेबल हो रहा है, सो दिस इज़ व्हाट माय स्विचिंग कॉस्ट विद द इंसेंटिव. सो दिस कम्स इनटू द पीपल रिस्पॉन्स टू द इंसेंटिव पार्ट. तो हमेशा पीपल जो है इंसेंटिव रिस्पॉन्सेस की तरफ रिएक्ट करता है. Now yes, explicit cost versus implicit cost. The cost of something, say a business, include both the explicit cost and implicit cost. We can say that one major implicit cost is the opportunity cost. An opportunity cost include basically the next best opportunity given up. जैसा कि हम लोगों ने इनिशियल स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जो कि आपने जो भी प्रोडक्ट परचेज नहीं हुआ उसकी कॉस्ट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि प्रॉब्ली यू कैन परचेज इट. बट इन टर्म्स ऑफ येस अपॉर्चुनिटी, हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट और हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर डिपेंड होती हैं. सो व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट? इट इज़ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इन्वॉल्व एन एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ अ मनी. जो भी हमने एग्जैक्टली एक्सपेंड किया है टू जस्ट बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट होती है. An opportunity cost that is incurred without any expenditures of a money, without expending any kind of a money, but I put certain kind of a cost in the indirect manner, that comes into the implicit cost. देन डिसएग्रीमेंट एंड इकोनॉमीज. येस, हमारी इकोनॉमी के अंदर किस किस तरीके के डिसएग्रीमेंट प्रॉब्ली अराइज हो सकते हैं. डिसएग्रीमेंट इज सर्टन काइंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट पार्ट. दैट मीन्स देयर ऑलवेज अ टू काइंड ऑफ एन कॉन्सेप्ट जिसके अंदर कुछ ना कुछ एक आर्ग्यूमेंट कॉन्सेप्ट रहेंगे. सो दैट्स कम्स इनटू द डिसएग्रीमेंट एंड इकोनॉमीज. बिजनेस इकोनॉमी is both a science and a study of a policy, united by a common way of thinking. So as a science, economists develop a model and deliberately simplify the account of how cause and effect work in some part of the economy. In terms of दो तरीके से हमारी बिजनेस इकोनॉमी काम करती है, एक साइंस के तरीके से, दूसरा स्टडी ऑफ पॉलिसी के तरीके से. अगर साइंस की बात करें तो इकोनॉमिस्ट कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप में चलते हैं कि जो भी एक सिचुएशंस और उससे रिलेटेड जो भी एजम्पशंस हैं उसका क्या कॉज है, उसका क्या इफेक्ट है ऑन दी वर्क. And at the same time, based on the assumption of what is important, model are created and used to make the suggestions about the policies and improve the basic economic outcome. So in that terms, yes, जो भी हमारे cause and effect से assumptions आती हैं वो हमारी एक suggestions about policies create करती हैं. Policy basically involve decision about scientific theories, पर्सनल वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस. इन टर्म्स ऑफ अगर पॉलिसी की बात की जाए तो पॉलिसी एक डिसीजन होता है जिसमें हम लोग साइंटिफिक थ्योरी से रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं, पर्सनल वैल्यू से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं, पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं. दैट्स कम्स इनटू द पॉलिसी पार्ट. दैट मीन्स टेकिंग एनी काइंड ऑफ एन डिसीजंस. देन पब्लिक गुड्स. Public good are basically what a product that one individual can consume without reducing its availabilities to another individual and form which is no one is excluded. In terms of आप जब एक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो विदाउट किसी को उसकी कमी किए बगैर, उसकी जब किसी भी तरीके की क्वांटिटी में डिडक्शंस ना आए और वो उतना ही अवेलेबल भी हो, so that comes into the public goods. That means product
विच वन इंडिविजुअल कैन कंज्यूम, जो एक इंडिविजुअल कंज्यूम कर रहा है विदाउट रिड्यूसिंग इट अवेलेबिलिटी टू अनदर, दूसरों की अवेलेबिलिटी उससे ख़त्म नहीं होती उसके यूज़ करने से, वो पब्लिक गुड्स होते हैं. वी कैन टेक द एग्जाम्पल्स इन अ पब्लिक गुड्स लाइक फ्रेश एयर. एक फ्रेश एयर जो होती है वो पब्लिक गुड का एग्जाम्पल है. क्लीन वाटर इज़ वन एग्जाम्पल. नॉलेज, लाइट हाउस, national defense, sewerage system, public park, and basic televisions and radios broadcast could be considered the public goods. So public goods are basically available everywhere and it's also called as a global public goods. तो public goods में वही सारी चीज़ें आ जाती हैं, हवा, पानी, नॉलेज हो गई, आपका पार्क्स हो गए, डिफेंस हो गया, एट द सेम टाइम टेलीविजन और रेडियो ब्रॉडकास्ट हो गया. इसमें आप कंज्यूम कर रहे हो इन सब चीज़ों को, पर दूसरों की कंजम्पशंस पर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं आता. एंड येस, एट द सेम टाइम पब्लिक गुड्स आर अवेलेबल एवरीवेयर, इसीलिए ये हर जगह अवेलेबल होती है और इसीलिए इसको ग्लोबल पब्लिक गुड्स भी कहा जाता है. देन दी property rights. Property rights are basically what economists realize that property rights are very important for the efficient use of resources. अगर एक resources की proper utilization करनी है, उसके लिए एक property right होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ऐसे economists मानते हैं. When an individual owns and controls the resources, they have an incentive to increase its value. जब एक individual चीज़ किसी भी तरीके के रिसोर्सेज को खरीदता है और उस पर कंट्रोल जनरेट करता है, सो दे हैव एन इंसेंटिव टू इंक्रीज इट वैल्यू, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज करने का भी उसके पास राइट होता है. सो व्हेन एवरीवन ओन्स द रिसोर्सेज or rather no one owns the resources, there is no one to charge for a use. So in that case अगर कोई लोग या कोई ऐसे पीपल्स जो हैं वो रिसोर्सेज को चार्ज कर लें, ओन मतलब खरीद लें, और कहीं ऐसे हो सकते हैं जो रिसोर्सेज को बिल्कुल खरीदे ना, सो इन दैट टर्म्स द चार्जेस प्रॉब्ली डिफर और द प्राइजेस वुड बी डिफर. सो इन दैट टर्म्स इकोनॉमिस्ट इसलिए ये चीज़ मानते हैं कि आप जब किसी भी तरीके के रिसोर्सेज या प्रोडक्ट को खरीदते हो, इट्स रिक्वायर्ड टू एड ऑन दी सर्टन property right, that means you have to own it. Then microeconomy, macroeconomy and international economy. If we were discussing about the macroeconomy, first we have to understand about the microeconomy. Microeconomy basically होती क्या है? Microeconomy is the superposed to deal with the behavior of the individual firms and market and detailed working of the price mechanism. In terms of कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, एक इंडिविजुअल फर्म को या एक इंडिविजुअल मार्केट को स्टडी करती है, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. जबकि मैक्रो इकोनॉमी वो स्टडी होती है विच एक्चुअली स्टडी द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. यानी कि इफ़ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वन इंडस्ट्री इन इंडिया, सो दिस इज़ माइक्रो इकोनॉमी. बट जब हम लोग इंडियन इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं, सो वो एक होल और मैक्रो इकोनॉमी हो जाती है. इकोनॉमी एज अ होल comprising such things as economic growth, development, inflation and unemployment. So in that case इस तरीके के कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमी में अराइज होते हैं. रिलेटेड टू इकोनॉमी, इन्फ्लेशन रेट क्या है, एक्सप्लेशन रेट क्या है, व्हाट वाज द राइजिंग पीरियड, डेवलपमेंट किस तरीके से होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है. सो वो सारे फैक्टर्स मैक्रो इकोनॉमी में एड ऑन होते हैं. नाउ व्हाट इज इंटरनेशनल इकोनॉमी? International economy is basically concerned with the effect upon the economic activity of international difference in the productive resources and the consumer's preference and the institution that affect them. So in that terms, international economy जो है वो mainly economic activities पे depend करती है of the international difference in the productive resources. इट बेसिकली एक जो इंटरनेशनल सिनेरियोज होते हैं, दैट मीन्स जो एक ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियोज होते हैं, उसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर मैक्रो इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करती है, दैट्स कम्स इनटू द इंटरनेशनल इकोनॉमी. सो इट इज़ व्हाट इट सीक्स टू एक्सप्लेन द पैटर्न एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इंटरैक्शंस. बिकॉज when they were different countries in a globe, when there were different areas in a globe, so वो किसी ना किसी तरीके की ट्रेड्स, किसी ना किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट, किसी ना किसी तरीके की इंटरैक्शंस में आएंगे. इन दैट टर्म्स वो इंटरैक्शंस किस तरीके से होंगे,
वो ट्रेड किस तरीके से होंगे, वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होंगे, इन सब की स्टडीज़ को बोलते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी की स्टडी करना. दैट मीन्स इट इज़ व्हाट सीकिंग और एक्सप्लेनिंग द काइंड ऑफ पैटर्न्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट पैटर्न जो फॉलो करके आप एक इंटरनेशनल इंटरैक्शंस और इंटर रिलेशंस जनरेट कर सकते हो. सो इन दैट टर्म्स दिस इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल इकोनॉमी. Then issues and priorities of India's. Yes, in this topic we are going to discuss about the certain issues and certain priorities of the Indian economy. In terms of, yes, as India prepare herself for becoming an economy superpower, it must be expedite the social economic reform and take a step for overcoming the institutional and infrastructure bottleneck in the system. Steps are to be taken for improving the pace and development. There are certain challenges that Indian economy is facing today. Yes, we all know that India wants to become one of the economic superpower, and India also have that much of capability to be that. So in that terms, there are certain kind of challenges always arise, and certain kind of priorities which the India has to given and consider. So in that term, what is the first challenge? So one of the challenge in the fiscal reform will be the reconciling the need of the fiscal consolidations with the appropriate tax reform. Indirect taxes not only affects the efficiency of resource allocation but also the investment climate. In terms of the first challenge is the fiscal reform. That means considering that what kind of an indirect and indirect taxes arises, how to generate the maximum taxes from the organization. As yes, direct taxes are very much easy to avail from the market, but at the same time indirect taxes are very much difficult to avail from the market. So at the same time, indirect tax, how we can collect the proper indirect taxes, this is the one of the challenge for the India. So in that terms, yes, it is what if the country is able to generate the indirect taxes, it affect the efficiency of resources allocation, also increase the investment climate of the country also. Second is there is a paramount needs to move the Indian culture beyond its centuries old dependencies on the monsoons by being the more area under the irrigations and by better water management. So this has a rightly being identified in the NCMP as one of the area with the highest investment priority. In that terms, yes, one of the priority of India is the agriculture surroundings. As we all know that India is the agriculture based country. In that terms, if we were more towards the monsoon dependency, so it is not the right way to perform in the agriculture sector. So we have to do certain technologies part, or we have to use certain kind of better management or better resources, better investment to increase the agriculture sector of the India. So that is basically comes into the second issue. Third issue is simplify procedures and relaxing the entry barriers for the business activity. The ease with which the firms are able to enter into and exist from the business activity is an important determinant of the investment climate. Yes, किस तरीके के इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंट्रीज अराइजेज हैं, कितनी ज़्यादा एंट्री एक कंट्री प्रोवाइड करती है कंपनीज़ की, किस तरीके के बैरियर्स वो प्रोवाइड करती है, इससे एक इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्रिएट होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी यूज इन दैट. Then initial investment raw in the infrastructure, industry and service will yield the best result only if the numerous resources flows are successfully intermediated at a lower cost. In that terms, yes, the first is what the initial investment एक इंडियन इकोनॉमी एज वी वर स्टडिंग. सो उस केस में अनदर प्रायोरिटी इज टू जनरेट द इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरेट द इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज कॉन्सेप्ट इन द बिजनेस. दैट मीन्स जितनी ज़्यादा एक सक्सेसफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सक्सेसफुल हम लोग इंडस्ट्री को क्रिएट करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोग ग्रो भी करेंगे. देन फार्मर्स एंड एंटरप्राइज शुड हैव टू असेस द फाइनेंस एट द कंपैरेटिव रेट and for all the maturities of their credit worthiness. Yes, at the same time, jitne bhi, as we were discussing about that Indian sector or Indian economy is more towards the agriculture sector. In that term, farmers and enterprise should have the access to finance at the corporate rate. एक proper financings भी होनी चाहिए farmers और
स्मॉल एंटरप्राइजेस को, ताकि वो एक अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस क्रिएट कर सकें, जिसके थ्रू वो एक नए इन्वेस्टमेंट्स और न्यू प्रोजेक्ट्स में और मेच्योरिटी प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हो सकती हैं. Then the infrastructure inadequacy, constant economic growth, particularly in the bottleneck state and in the agriculture sector. In that terms, yes, it is what the infrastructure inadequacy. Economy के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा drawback, that is infrastructure inadequacy है. The infrastructure is not properly prepared and properly created. So in that case, इसी एक particular की वजह से एक backward state भी arise होती है. और we were probably जो कि एक लैंड एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ होनी चाहिए, वो कभी कभी वेस्ट और मिसयूज़ भी हो जाती है. देन इनिशिएटिव्स टेकन इन द नंबर ऑफ अ सेक्टर like telecoms, roads, ports, civil aviations had started yield resulting. Yes, at the same time, organization deals with the different kind of areas, or we can say that not exactly organization, but the government is dealing with that. So in that case, we were discussing about the government. So telecom is the one sector, road is one sector, ports and civil aviation is the another sector. So all these are basically performing for the India just to get the proper results. Then there is a need for the high foreign investment in the form of a foreign direct investment. Such investment trigger the technology spillover, assess the human capital formations, contribute to the international trade integrations, and particularly export. Help to create a more competitive business environment, enhance the enterprise development, increase the total factor productivity, and more generally improve the efficiency of the resources used. That is what, to generate the proper FDI. Proper FDI generate is one of the again source to get the proper kind of an investment scenarios in Indian economy. So in that terms, yes, a more competitive business environment will be created if we do that. It's basically help in doing that. It, yes, at the same time it help in increasing the enterprise development. The enterprise would be developed, the total factor of productivity will automatically develop, and yes, it improve the efficiency of resources use also. Then another issue is control of population is also a major reform that has to be taken place. Yes, another reform is to control the population. Then another is spreading of the education is equally important in evaluating the standards of Indian economy. Yes, spread out the proper education. There must be a proper education for the people of India. Then abolitions of a property and the abolition of poverty and unemployment is again a bending goal of the Indians' development policy and program. So in that terms, yes, to abolish or to wind up all the poverties and unemployment is another concept for the Indian development which is required to be happen. Then sectors of Indian economy. Yes, what are the different kind of sectors in a Indian economy? Indian economy के अंदर कौन से अलग अलग तरीके के sectors हैं? So they were probably three major sectors, जिसके अंदर सबसे पहला है the agriculture sector. As we all know that agriculture sector is yes one of the essential sector in India. So it is what like क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है? इंक्लूड लाइक फॉरेस्ट्री, लॉन्जिंग, फिशिंग अकाउंट्स. So these all comes into the agriculture part. So it is the largest economic sector and play a very significant role in overall social economic development of India. So that is what, due to the study improvement in the irrigation technologies, modern agriculture practices, the yield per unit area of all the crops has been increased tremendously. In that terms, yes, the everything is just increasing. Reason is to get the proper benefit from the market. Another sector is industry sector. Industry sector is yes one of the area who hold the textile industries. So and yes, automobile sector has dominated the inherent strength of the Indian laborers and capitals also. That means yes, industries के अंदर जो major contribution है that is of the textile industry and automobile sector which actually performing in the Indian scenario. So that comes into the industry concept. Then service is basically sector which is fastest growing sector. It has the largest sale in the GDP accounting for about 48% in 2000. So the business services, communication service, financial service, community service, hotel, restaurants and trade service are among the first growing sectors in it, because the service sector is improving. So that's obviously they were the fast growing sector in India.
So yes, they're all about for the today's session. We were winding up here. So you have to give certain answers of a few questions. First is explain the three major sectors of Indian economy. Indian economy के कौन से 3 sectors हैं आपको वो explain करना है. Then discuss the principle of Indian economy. Indian economy के principles आपने state करने हैं. So yes, we were winding up here. So thank you so much. Happy learning. We learn.